Hello everyone, welcome to this class. Computer ro 100 MCQs practice kariba. ARI AMIN SFS and ICDS Supervisor ro main exam. Okay, आरंभ करिबा. Question number 1. Which generation of computers used vacuum tubes? कोंतु vacuum tubes को केउ generation of computer रे व्यवहार करा जाउथिला? vacuum tubes को first generation of computer रे व्यवहार करा जाउथिला. Option A is your right answer. Okay, vacuum tube mane rakhantu. And third generation of computer बेलकु integrated circuit को use करागला. IC chip जहाँ को जाए integrated circuit को use करागला. Next, analog computer is try करिबा. Analog computer गोटे कोन अटे? Currently हमें digital computers को use करूछंती. Digital computer understand 0 and 1 रो language को. ठीक अछि. Means गोटे bit रो language जहाँ binary bit अटे. Analog computer कौन करिवो? Analog computer होची गोटे device that operates on data in the form of continuously varying physical quantities. That is our आपनकर analog computer. किंतु currently हमें कौन use करछंती? Digital computer. Option B is your right answer. Next, which device is used to store data permanently? डाटा को परमानेंटली स्टोर करबा पई हार्ड डिस्क को यूज करा जाय. ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और एसएसडी ही परिबो, सॉलिड स्टेट रो ड्राइव ही परिबो. राइट, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मदरबोर्ड? गोटे मदरबोर्ड रो पर्पस कोन ही परिबो? गोटे मदरबोर्ड रो पर्पस कोन? मदरबोर्ड कोन जहा को आपण प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते. ओके, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी कहा जाए. कनेक्ट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. मदरबोर्ड रे कोन थाए? जेमिति आपनकर सीपीयू सॉकेट रे सीपीयू थाए, प्रोसेसर जा कहा जाए. राइट, तो सेमिति मदरबोर्ड रो पर्पस होची कनेक्ट करिवो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स इज यूज्ड? फ्लिप फ्लॉप कौन प्रथमे कहतो देखिबा. देखंतु आपनकर बीट रे जो डाटाटा स्टोर हुए दैट इज फ्लिप फ्लॉप. बीट कौन? 0 and 1. ओके, ताले इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट्स इज यूज्ड? फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट आपनकर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM रे यूज करा जाय जहा बहुत फास्ट अटे. ठीक अछि, SRAM इज योर राइट आंसर. What is the purpose of an operating system? गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो पर्पस कोन हे परिबो? क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिबा. गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रो पर्पस कोन हे परिबो? ऑपरेटिंग सिस्टम रो पर्पस होचे हा मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स. मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर को रन करेबो ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट, देन ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे केउ प्रकार रो सॉफ्टवेयर अटे? ऑपरेटिंग सिस्टम होचे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. मन रखंतु, सिस्टम सॉफ्टवेयर. एग्जांपल विंडोज 10, विंडोज 11 गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, व्हाट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कोथि पई व्यवहार करा जाय? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोथि पई व्यवहार करा जिवो? प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर. मालवेयर होची जहा कंप्यूटर को क्षति पहुंचाइबो. ठीक अछि, वायरस को प्रोटेक्ट करिबा डिटेक्ट करिबा पई एंटीवायरस को यूज करा जाय. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जहा इंस्ट्रक्ट करिवो कंप्यूटर कोन करिवो बा गोटे प्रोग्राम कोन हेबो, दैट इज कह जिवो सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, एडोबी एक्रोबैट. एडोबी एक्रोबैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एडोबी एक्रोबैट जरिया रे आपण कोन करंती? एडोबी एक्रोबैट जरिया रे आपण पीडीएफ फाइल को ओपन करि परिबे. मींस यू कैन रीड ए पीडीएफ फाइल. बट एटा गोटे ऑप्शन डी हबो राइट आंसर. प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट अटे. प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट होचे हा एडोबी एक्रोबैट को आपण
further modify करि परिबे नाही. Okay, that is not an open source software. Okay, तो जते बेले आपण एटा को modify करिया पई चाहिबे, then you need to contact with the owner. Adobe Acrobat ro owner सहित आपण को contact करिवार अछि. Or we can say simply proprietary product होची, that is आपण को यार source code purchase करिया पई पड़े. Next, in Excel what is cell reference? Excel रे cell reference कोन हे परिबो? ट्राई करंतु. Excel रे cell reference कोन हे परिबो? Cell reference होची the location of a cell. Cell रो location को cell reference कहा जाय. Cell रो location means intersection of column and row is your right answer. Next, which application software is best suited for managing data? Data को manage करिया पई MS Access is the best suited. Next, what is the purpose of mail merge in Microsoft Word? Microsoft Word रे mail merge रो purpose कोन? Mail merge रो purpose हो जेहा create personalized letters. Okay, like आपण 100 peoples को mail send करिया पई चाहंती different name रे, then कोन हबो ताहा Microsoft Word रे mail merge option जरिया रे same mail को आपण 100 peoples को send करि परिबे, create personalized करि परिबे letters को. What does URL stand for? URL रो full form कोन? Uniform Resource Locator हबो. Uniform Resource Locator, link नो. Option A, option Universal Resource URL, Uniform Resource एटा लोकेटर करंतु. ठीक अछि, लोकेटर हबो, लिंक नो. Uniform Resource Locator. ओके, Uniform Resource Locator, URL रो फुल फॉर्म कोन? Uniform Resource Locator. कोनोसी भी ऑप्शन रे नाही. ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. What is the primary function of a web browser? गोटे वेब ब्राउजर रो प्राइमरी फंक्शन कोन अटे? वेब ब्राउजर रो प्राइमरी फंक्शन होची एक्सेस करिवो वेब पेजेस को. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. ओके, वेब ब्राउजर रो प्राइमरी फंक्शन होची एक्सेस करिवो वेब पेजेस को. What is the purpose of a search engine? गोटे सर्च इंजिन रो पर्पस कोन? सर्च इंजिन जेमिति गूगल, बिंग, याहू आपण यूज करंती, and most popular Google अटे. एही सर्च इंजिन रो काम हेउची to find information on the internet. इंटरनेट रे थिबा इंफॉर्मेशन को आपण सर्च करी पाई परिबे. नेक्स्ट, what is the term for the unique address assigned to each device on a network? That is internet protocol रो एड्रेस each device, प्रत्येक डिवाइस रो कोन अलग अलग रहिबो IP एड्रेस. नेक्स्ट, which device is used to scan physical documents into digital format रे? फिजिकल डॉक्यूमेंट को आपण फिजिकल डॉक्यूमेंट को आपण डिजिटल फॉर्मेट रे स्कैन करिवे. मींस कोन? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी रे कन्वर्ट करिवे, सेति में स्कैनर को यूज करा जाय. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कोन निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हबो? माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेल, बिकॉज़ विंडोज, मैक्स एंड लाइनक्स सबुडा गोटे गोटे operating system comes under system software. Next, what is the purpose of utility software? Utility software रो purpose कोन हबो कोंतु? Utility software रो purpose होजे to perform routine maintenance task. Utility software जेमिति antivirus हला, okay, or we can say disk cleanup गोटे जेमिति आपनकर रहउची utility software. Next, what is a programming language used for? गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोथि पई व्यवहार करा जाय? गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोथि पई व्यवहार करा जाय? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्यवहार करा जाय राइट मशीन इंस्ट्रक्शंस पई. ठीक अछि, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को व्यवहार करा जाय. what is the term for a computer program that replicates itself and spreads to other computer? Worm, we can say. Worm is your right answer. In PowerPoint, what is a slide? PowerPoint रे slide कोन हबो कोंतु?
PowerPoint रे स्लाइड कोन हे परिबो स्लाइड होचे एक सिंगल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 107 107 रो बाइनरी इक्विवेलेंट कहूछ ताले एटा को 2 रे डिवाइड करंतु ओके एटा को आपण 2 रे डिवाइड करले रिमाइंडर केते रहउछ आपण एमिति डिवाइड करिवे देन एंड टर्म पर्यंत आपण जेतले डिवाइड करिवे जहा रिमाइंडर आसीबो से रिमाइंडर को एकाठी कले आपनकर कोन आसीबो बाइनरी इक्विवेलेंट आसीबो 1101011 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द एक्रोनॉमी BIOS stands for BIOS होची बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन वेब ब्राउजर निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक कॉमन वेब ब्राउजर नुह गूगल क्रोम ही परिबो मोजिला फायरफॉक्स हेबो एंड माइक्रोसॉफ्ट रो एड्ज आल्सो बट एडोबी एक्रोबॉट इज नॉट ए कॉमन वेब ब्राउजर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेगाबाइट एमबी एंड gigabyte GB we know 1 GB equals to 1024 MB what is the term for the process of converting data into a code that cannot be easily understood that is called encryption encryption is your right answer what does the acronym HTML stand for HTML ro full form hochi hypertext markup language option A is your right answer what is an algorithm kuhantu algorithm kon he paribo algorithm hochi a set of instruction jaha problem को solve करिया पई algorithm को use करा जाय next deleted data remains on a disk until जहाँ भी डाटा डिलीट अछि ताहा डिस्क रे रहइबो जो पर्यंत सेटा कोन रिसाइकल बिन रु एम्प्टी करा जाय नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 how can you select an entire document in Microsoft Word quickly select by select all use करा जाय control A press select all next how can you insert a table of contents देखंतु एठी को गला टेबल ऑफ कंटेंट्स को केमिति आपण सिलेक्ट करिवे कोथरे माइक्रोसॉफ्ट रो वर्ड डॉक्यूमेंट रे सेथि आपण रेफरेंस को जिवे देन टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करिवे नेक्स्ट व्हिच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allow you to create and apply a consistent look and feel across multiple documents गोटे कंसिस्टेंट लुक माने गोटे टेम्पलेट्स को क्रिएट करा जाय परिबो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट रैप ब्रेक कंटीन्यूअस ब्रेक तो अछि सेक्शन ब्रेक अछि पेज ब्रेक अछि किंतु टेक्स्ट रैप ब्रेक तो किछि नाही ऑप्शन ए हि पर राइट आंसर नेक्स्ट हाउ कैन यू फ्रीज the top row in Excel so that it remains visible while scrolling सेथि आपण view tab को जिवे then freeze pans को जिवे then freeze करिवे top row option A हेबो right answer how can you insert a new column to the left of the current column in Excel रे तो right click करंतु insert को जानतु then गोटे columns add करंतु option C is your right answer how can you protect a worksheet in Excel from being edited by other users Excel sheet को protect करिया पई तो आपण review tab को जाय परिबे ऑप्शन बी review tab को जाय परिबे नेक्स्ट what is the purpose of the handout master tool in PowerPoint handout master tool रो purpose कोन हे परिबो गोटिए PowerPoint रे handout master tool रो purpose कोन हे परिबो ट्राई करिबा handout master tool रो purpose होची it allows to print slides with multiple slides okay per page for handouts option A तो ठीक लागुची means handout master जरिया रे आपण कोन करि परिबे slides रो print नै परिबे with multiple pages को गोटे slide रे नै कि और handout purpose रे next what is the purpose of eyedropper tool in PowerPoint eyedropper tool रो purpose कोन eyedropper ता जनरली कलर पय यूज करा जाय to select colors from existing objects from or formatting next what is the purpose of the slide show settings
tool in PowerPoint. Slide show setting tool ro purpose kono? That is used kara jaye to configure options such as loop ro presentation hai paribo kimba show and hide kari paribe slide ro numbers ku. Next, which feature in PowerPoint allows you to create a custom animation path for an object? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ motion path କୁ ଯାଇପାରିବେ. Next, what is the purpose of the report wizard in Microsoft Access? Microsoft ର Access ରେ report wizard ର purpose କଣ? report wizard ର purpose ହେଉଛି to generate printable reports based on tables and queries. Option C have right answer. In Microsoft Access, what is the shortcut key combination to open the lookup wizard in design view? Lookup wizard को open करिबा पई Microsoft रो Excel रे रहिछि control L, but Access रे केमिति समिति किछि अछि कि Access question number 43 आपन को यारो राइट आंसर कोन लागुछि ठीक है, आपन एटा कमेंट सेक्शन रे जणाइबे. जेहेतु एटा Microsoft रो Access विषय को जाइछि तो कंट्रोल L हे पारे. ओके, तो एटा आपन टे कंफर्म करंतु और एल्स हम एटा परे देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. इन Access, what does the parameterized query feature enable you to do? Parameterized query जते बेले आपण enable करिवे, that is एही feature बा एही tool रो काम कोन? promote the user to entire criteria when running query. Parameterized query आसीबो माने आपण को running query को फोकस करिवार अछि. ओके, ए running query विषय रे मन रखथान. नेक्स्ट, in email terminology, what does DNS stand for? Email terminology रे DNS कोन? DNS होची domain name system. Domain name system option A is your right answer. Which type of email attack involves sending fraudulent emails that appear to be from a reputable source to deceive individuals into revealing sensitive information, that is called phishing? Option B is your right answer. What is the primary function of the heat sink in a computer? Heat sink ro primary function hochi to cool the CPU. The bottom of the window which shows the status of the document, that is called status bar. Okay, status bar we can say. Next, what is the key used to rename a file in Windows? Rename kariya pai function to F2 को use करा जाए. Option D is your right answer. The device that can act as both input and output device ताहा कोन हो? आपन टच स्क्रीन, आपन स्मार्टफोन रो टच स्क्रीन को आपन कहि परिबे. The file extension of a Microsoft PowerPoint presentation is Microsoft PowerPoint presentation ro file extension hochi .pptx. Next, the number system used by computers which have only 2 digits is called binary number system. The freeze pan option in Excel is available under dash ribbon. देखो freeze pan टा आपनकर view tab under रे आसी जिवो. The Windows file system FAT stands for FAT रो full form होची file allocation table. The input device that can capture your voice is गोटे input device जहा voice को capture करिवो, that is microphone हेबो. Dash option in view menu रे थिबा is used by the presenter to make notes for each slide which can be used while presenting. तो सेटा को हजिबो notes pads. To run command, the run command used to open calculator application is सेतमे आपण calc run command को use करि परिबे. Next, which option from the layout ribbon helps to combine the contents of selected adjacent cells into a single cell? सेतिमे आपण कोन करिवे? merge cell कर दियंतु. ठीक अछि, group of cell को single cell रे merge करा जाय परिबो. This is used as reference point for cross reference index and macros. Bookmark ता होछि तार गोटे reference point. Next, in MS Office, word spelling and grammar button is available in, that is review tab under रे आसी जिवो.
The frequently visited websites are saved under bookmark bar for quickly access करि परिबे. In network service, WIN stands for कौन? Windows Internet Name Service. Next, S is a basic unit of memory. ना bit होचे आपनकर basic unit of memory. Next question. S is the process of preparing the disk for its initial use and create new file system, that is called आपनकर formatting. Formatting जरिया रे आपण new file system को create करि परिबे. The default alignment in MS Word is, MS Word रो default alignment कौन होबो? That is left alignment. Next, what is the function of F1 in MS Word? MS Word रे F1 opens help में use करा जाए. S is the shortcut key to end a PowerPoint presentation. गोटे PowerPoint रो presentation को end करिया पे आपण escape shortcut key use करि परिबे. Next, question number 68 try करिवा. In Microsoft Word, if you are working with a file and want to open the last auto saved draft, you need to enable सेथि पय आपण फाइल को जानतु, then info, then manage version को करि परिबे. Next, S represents 4 bits और गोटे byte रो half of a memory को कहजिवो, nibble कहजिवो. Option B is your right answer. Where you can find the word count option in MS Word, try करंतु. Microsoft Word रे word count आपण केतोटी word को टाइप करछंती, that is word count option जरिया रे you can see करि परिबे. तो सेति पय आपण review को जिबे, then word count option को जिबे. Combining the contents of selected adjacent cell into a single cell in Excel can be done using, सेति पय आपण कोन सेति पय केउ फंक्शन को यूज करि परिबे? Concatenate function is your right answer. Cell merge पय. In Excel, this chart is used to show a percent of total for a data set at a specific point in time, that is pie chart को use करा जाए. In PowerPoint, which of the following views displays each slide filling the screen and delivers the presentation to the audience? सेति पय आपण कोन slide show करि परिबे. Next question. S is a single user operating system. गोटे single user operating system होची MS-DOS, Microsoft DOS operating system. The program that initializes the operating system on the system startup is, that is bootstrap. Option B is your right answer. Emails that are created but not sent to the recipients are saved under dash folder of the mailbox. Okay, already mail को आपण create करछन, but सेटा send ही नाही recipient पाखकु, that is draft folder रे store हे कि रहइबो. Okay, next question number 77. S command is used to set page orientation like width, height, number of slides in the presentation. ताले केउ कमांड को व्यवहार करा जाय? सेति में पेज सेटअप रो कमांड को व्यवहार करा जाय. In MS Excel, restricting the number of rows that are being displayed based on a condition is called, that is filtering कहजिवो. Filtering मन रखंतु, very important. Next, इटे देखंतु आपनकर $A1 रहला, एटा होची कोन कॉलम पई, 1 टा होची रो पई. In MS Excel refers to mixed cell reference होची कहा रो and column रो. Next, DHCP stands for what? DHCP रो full form होची Dynamic Host Configuration Protocol. Very important. Next, in Microsoft Word, the default theme font for headings and body text is called Calibri. Calibri body मध्य option रे रहे. The term SATA, SATA, used in hard disk technology stands for, SATA रो full form होची Serial Advanced Technology Attachment. Next, what is the shortcut key used to move the cursor one word to the right side को? Right side को move करिया पे Control plus right arrow को click करंतु. Next, DES is the device that gives you surge protection and power backup during a power outage. कौन है जो सेटा? UPS, uninterruptible power supply is your right answer.
which feature in Microsoft Word allows a person to do proofing a document and mark suggested editing and deletion ସେଥିପାଇଁ track changes କୁହାଯାଏ track changes हबो यार right answer simply ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ document you have created but someone edited that you can know that is the track changes. Next, the command line operating system DOS stands for disk operating system. S is a non-impact printer. निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक non-impact printer हबो that is laser printer. Next, the shortcut key to italic your selected text is control I. Okay, टिके ढळे हेकि रहबो slanted हेकि रहबो. Which function in Excel calculates the largest value in a set of number रे सेति आपण maximum बाहर करि परिबे. DVD stands for digital video disc. Option A is your right answer. Every web page has unique address called that is URL, unique uniform resource locator. S widgets help the presentation to run it on another computer. सेति पय आपण package for CD रे यूज करि परिबे. Old version रे एटा आस्तुला आपनकर. The program installed on your Windows operating system can be accessed via अपना start menu को जानतु then the application or program को you can access. Every cell in an Excel worksheet contains an address which is defined by a column letter followed by row number. Okay, column and row intersection रे गोटे cell रो location create हुए. What is the shortcut key used to open new document? गोटे new document को open करिया पे केउ shortcut key control N. Existing document को open करिया पे control O. S in the CPU carries out all arithmetic operations plus and or function पाई that is arithmetic logic unit को जाए जाको ALU को जाए. Next question, the dash function key is used for spell check in MS Excel रे F7 को यूज करा जाए. F7 और review tab को जाए करि परिबे. Question number 98, dash is referred to as discovering patterns based on a large set of previous year data. Eta ko data mining. Option C is your right answer. The alternative to MS Excel which is offered by Google Sheets. As your last question, question number 100 for you. In PowerPoint, dash group is available in slideshow tab. Dash group is available in slideshow tab रे आपनकर monitors रो कोन रहिछि गोटे ग्रुप्स रहिछि slideshow tab रे जेमति home tab insert tab थाए सेमति slideshow tab रे. तो यह थिले आपनकर 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आपण केतोटी प्रश्न करि परिछन्ति आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे एवं आपण यारो पीडीएफ नोट टी केउठारु डाउनलोड करि परिबे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि. एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु. ओके, एवं आपण क्लास टी को लाइक करबा सह बहु मात्रा रे शेयर करंतु. आई होप एई क्लास रे आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास.